Hey guys, this is India Trading Academy and my name is Dev. Welcome to the weekly update of Nifty. एंड आज स्टार्ट करने से पहले हमारा वीकली अपडेट मुझे कुछ बात करना है अबाउट आर दिस सीरीज एक्चुअली एंड आई वुड से दिस इन अ बेस्ट हम्बल वे पॉसिबल क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस आई बिकम अ लिटिल रूड एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज सम पीपल आर एक्चुअली नॉट गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस सीरीज. नाउ ये सीरीज शुरू करने का रीजन सिर्फ इतना है, अगर आप बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट में एंटर करने का सोच रहे हैं तो इंटरनेट पे ऑलरेडी इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी मिसकंसेप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं. सो एज ए बिगिनर यू विल 100% गेट कंफ्यूज्ड. जिन्हें ऑलरेडी 1 साल 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग फिर भी कुछ जज कर सकते हैं, पर इफ यू आर अ बिगिनर यू आर टोटली क्लूलेस. ऑलराइट, द रीजन ये सीरीज जो स्टार्ट हुई है एज ए बिगिनर को कैसे हेल्प करना है उस बेसिस पे हुई है. एज ए बिगिनर किन चीजों से आपने बचना है और किन चीजों को आपको आइडेंटिफाई करके उनका यूज करना है. ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट वीडियो वाज अबाउट इंडिकेटर्स. अगर आप बिगिनर हैं तो आप जरूर इस ट्रैप में फंसेंगे कि एमएससीडी से दिन का 2000 रुपए कैसे कमाएं, आरएसआई से दिन का 5000 कैसे कमाएं, निफ्टी में 1000% की मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी. ऑलराइट, नाउ वी हैव ए कंबाइंड एक्सपीरियंस ओवर द 18 इयर्स इन द मार्केट और मुझे मालूम है मार्केट में इस तरह का कोई भी फॉल्स इंडिकेटर नहीं चलता. मुझे कोई भी इंक्लूडिंग माय मेंटर्स, इंक्लूडिंग माय कलीग्स एंड इंक्लूडिंग मी, मुझे ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं मिला जो मुझे बताए मैं आरएसआई सिर्फ ट्रेड करता हूँ और मेरा अकाउंट 100% के रेशियो पे हर साल डबल कर लेता हूँ, या फिर मैं सिर्फ मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा हूँ और आई एम वेरी वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर. Everybody who is trading indicators, I have seen their account, I have talked with them, they are losing money in the market regardless whatever the strategy is. Alright, so अगर आप बिगिनर हैं और आपने तो कोई आइडिया नहीं है कि इंडिकेटर्स किस तरह से काम करने, आप इस तरह के ट्रैप में आएंगे. आपके पास ऑलरेडी कुछ पैसा होगा जो आपने डीमेट में डाला है एंड आरएसआई के बेस पे आपने स्ट्रेटेजीज पर ट्रेड करा एंड आप ये चीज लिखित में ले लें, दैट अकाउंट विल गो डाउन. नाउ जिन्होंने ये चीज करके देखी है वो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं. तो अगर आप बिगिनर हैं, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, फ्रॉम दीज काइंड ऑफ मिथ्स इन द मार्केट कि आप किसी भी इंडिकेटर से पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज दोज ऑल इंडिकेटर्स आर फ्री फ्रॉम द ब्रोकर्स. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर कोई भी इंडिकेटर पैसा बनाता तो मैं तो कोई भी इंडिकेटर आपको फ्री में नहीं देता. ऑलराइट, नाउ द सेकंड ऑफ दिस सीरीज वाज कि हाउ टू आइडेंटिफाई फेक और यूजलेस कोर्स इन द इंडस्ट्री. जैसे इसका अपोजिट कर दें और आपको यूजफुल कोर्सेस और हाउ टू आइडेंटिफाई जेन्युइन एकेडमी एंड इंडिविजुअल आपको पता चल जाएगा. नाउ लिसन टू मी दिस वेरी केयरफुली. आई हैव नो पर्सनल hard feelings with any academy in the trading industry or individual in the trading industry. Now this video is not about a particular academy or a particular individual. Now this video is about concept of the trading academies. Now 90% of our students are experienced students. They have done courses and some of them have done, किसी ने 5 जगह से कोर्स किया, किसी ने 6 जगह से कोर्स किया. Only 10% of them are beginner. And in 90% लोगों में एक चीज कॉमन थी जो इस वीडियो में यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करी है. या तो उनका कोर्स 2 से 4 दिन का था, या उनको कोर्स खत्म होने के बाद बैक सपोर्ट नहीं था, या फिर कोर्स खत्म होने के बाद उनका कोई पेड मेंबरशिप था जहां उन्होंने पेड मेंबरशिप दी और वहां पर उन्होंने पैसा लूज किया. Let me tell you about it. This is a real story actually. One of our recent student actually, he has done 3 courses and all of them in the oldest academy in this trading industry. He has done all the levels from one of those academy. I'm not sure what was the name of it, but he's still losing money. Now the conclusion is this video is again not for a particular person or academy. This video is just a concept. 4 दिन में मैं भी आपको कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता हूँ. एज ए फैक्ट मैं आपको ट्रेडर भी नहीं बना सकता हूँ जो अपने कैपिटल बचा सके. प्रॉफिटेबल तो दूर की बात है. नाउ नेक्स्ट वीडियो हमारा एडवाइजरी पे आ रहा है. मार्केट में जो टिप्स आती हैं, जो एडवाइजरी फर्म है, क्या वो यूजफुल है या नहीं. नाउ डू वी हेट एडवाइजरी, एनी पर्टिकुलर एडवाइजरी? ऑफ कोर्स नॉट. और किसी इंडिविजुअल से भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट आई हेट द कंसेप्ट ऑफ द टिप प्रोवाइडर और द एडवाइजरी फर्म. द वे दे वर्क, I don't like that. I have an international connection with traders and even I'm connected with so many traders in India. किसी के पास भी एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं आया
या मेरे पास भी कोई ऐसा ट्रेडर नहीं आया कि मैंने इनका टिप फॉलो किया है या फिर मैं इनकी एडवाइजरी फॉलो कर रहा हूँ और मेरा अकाउंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है एंड आई डोंट केयर नाउ कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन. ऑल राइट. So that again I would repeat, the purpose for this series to make your eyes open in the market, to help you guys what is useful in the market and what is useless in the market. All right, because there is always going to be two parts of the coin. एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा. Now as a beginner आप में जज करने का एजुकेशन लेवल नहीं है. अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप ऑलरेडी जज कर चुके हैं उन सब चीजों को. पर अगर बिगिनर है, how can we save them? Maybe these video will help you. आई एम नॉट श्योर. अगर आपको लग रहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई वीडियो आएगा, बेस्ट MACD स्ट्रेटेजी अर्न 5000 अ डे, तो आप गलत चैनल पर आए हो. गो एंड फाइंड योर काइंड ऑफ वीडियोस. वी आर सीरियस ट्रेडर्स एंड वी आर डूइंग ट्रेडिंग ओनली. All right, so I guess I made my point clear over there. What this series is all about. This series is all about helping the beginners so they can have an idea. क्योंकि जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वो तो ऑलरेडी जज कर सकते हैं. पर बिगिनर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम बिगिनर्स होते हैं जो ट्रैप में आते हैं. ऑलराइट, एंड वी डोंट वांट दैट. I'm not saying you should do the course from this academy. As a matter of fact, I really even don't care about whether you do the course or not, because that's not our main income source. Our main income source comes from trading. We are not professional teacher. We are professional traders. All right. It's up to you. If you have seen the live trades and if you think we have something which you can take benefit from, you're most welcome. But इतना सब बताने के बाद भी, if you still want to follow indicator, if you still want to do the course which is just a 4 days long, be my guest and do it. And after that your just account will teach you lessons. Okay, so you will listen to your account, not us, not a problem. So anyways, I'm really sorry. This was the humble I could go about this. Anyways, we have said enough and let's get started on the Nifty view. Now today you will get some little extra information because we are already at our 272 target. So if you are following us for past couple of weeks, you know we were looking for 272 target, and now that is achieved. I think over there, I don't know. Now what is the next scenario? Now listen to this very carefully. This is an impulsive move. This is a pulsive move to the upside. Oh, we have hit 272 extension levels of the previous impulse. I don't want to go in details of that, but now you see this arrow. I have made this very closely to the lows of the market. Now what we are looking for, now right now this market doesn't look weak, it's actually strong. If you go little over there, जब तक आप इस arrow के left side में हो, you are at the strong side of the markets. All right, so what does that mean? You should be looking for buy. Any sell you get, that will be short-term sell in the market. You might get one more up after that again, because since you already have got 272 target and you have already extended this move, so what happens at some point, आपका ये level टूटेगा और आप एरो के राइट साइड में आ जाओगे, just like these. All right, and at that moment we would be going to correct this impulse, either in a reversal pattern or either in a corrective trend continuation pattern. All right, so that's the view for few months from right now. All right, remember we were saying over here that we are going to 10,650 in some of our weekly update, if you guys remember. Now again we are saying we are at the 272 and we are at the top, but as long as you are left side of the arrow, you are pulsing up. So make sure you are having buy entries, and the moment you are breaking this trend to the right side or to the downside, and that moment your short entries will be activated, so you will get more points in the short selling instead of buying. अभी तक क्या हो रहा है, आप buy में ज्यादा points ले रहे हो, short में कम आ रहा है. By the time you are on the right side of the arrow,
you will get more points in the short side, just like these. All right, so we would be trading that up and down, up and down. You, if you guys are following us, you know we can do that, and we every day do that. All right, यहाँ पर सिर्फ इंडिया ट्रेडिंग एकेडमी का व्यू ऐसा नहीं कि we are going down or we are going up. We literally draw the market how it's going to go in that direction. All right, guys. So this was the weekly update on Nifty, guys. If you are looking for the best course in the industry, and ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया ट्रेडिंग एकेडमी पे हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी इंडस्ट्री को देखा है. And if you want to have proof of that, you can find out yourself. पर अगर आप बिगिनर है तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं, then you can literally say what kind of trading we do. All right. So we are offering only one course regarding trading. Each and every detail is available on our website, which is indiatradingacademy.com. You can go and check out if you are interested. I'll see you next time. This is India Trading Academy signing off. Thank you so much.